पहला प्रैक्टिकल है, दैट इज़ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 11th क्लास का पहला प्रैक्टिकल है, तो एक बार इसको देख लो ताकि जब हम क्लास में इसको देखें तो तुम्हें इसके पीसीस के बारे में पता हो, ठीक है। Of a compound microscope. A compound microscope has multiple lenses which collect light from the object and then focus the light into the eye. These microscopes have the ability to magnify very minute objects to a substantial size, clearly showing the smallest details. There are three major parts to the compound microscope: a body tube, an objective lens, and an eyepiece. ठीक है। The body जब हम tube इसको is क्लास में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कि आपका बॉडी पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका आई पीस है, ठीक है। आई पीस होता है जहाँ से आप आँख लगाकर अपने प्रोडक्ट को जो है अपने उसको देखते हैं। comprised of two smaller telescoping tubes with lenses coaxially mounted at either end. The wider tube holds the objective lens, while the narrow tube holds the eyepiece. ठीक है। So this is eyepiece, this is objective lens, और इसको तुम मूव कर सकते हो। क्लास में जब आप देखेंगे इसको आप मूव कर सकते हो। The knobs for both coarse and fine adjustment allow the tubes to slide one into another, varying the distance between the two lenses. The lenses are convex with different focal lengths. क्या इनके अंदर लेंस लगा होगा यहाँ पर, ये कन्वेक्स लेंसेज है। The lens closer to the object is the objective and has a short focal length, FO, usually below 1 centimeter. The lens nearer the eye is the eyepiece, although the eyepiece क्या तो 11th मेडिकल B2 ने क्लास में देखा तो ये आई पीस का लेंस है। also has a short focal length, FE. It is still greater than the focal length of the objective. A revolving nosepiece, known as a turret, is attached to the lower end of the objective. The turret can be rotated to change the power magnification as necessary. Below the objective sits a flat platform known as the stage. On the surface of the stage, two stage clips hold the slide in place. A small aperture is present in the stage, allowing light into the body. So ये जो आपका मिरर है इस पे लाइट पड़ेगी, यहाँ पे तुमने अपना ऑब्जेक्ट होल्ड किया होता है, इस पे लाइट जाती है और आपका ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी एंड आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लाइटन अप हो जाता है, आप उसको ईजीली विजिबली देख सकते हो। The body tube is arranged on an arm which is connected to a strong base. This arm allows the body of the microscope to tilt. A small mirror at the base of the microscope reflects the light through the stage aperture. Above the mirror, an iris, also known as a diaphragm, is present. Iris helps in controlling the amount of light passing into the stage aperture. Working of the compound microscope. The object O is placed just outside FO, the focus of the objective lens. A real inverted. ये आपको नहीं है, दिस इज़ योर फिजिक्स। आपको बायो में इसको स्टडी करना है, इतना ही बहुत है। आपको इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार इसको देखो, फिर हम क्लास में जब इसको पकड़ेंगे हाथ में तो मुझे पता, सबको पता होना चाहिए कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।